everyone. I hope आप लोग अच्छे हो and you people are practicing problems, learning concepts. Let us for now solve this question and let us first start with reading the question. So a composite bar has two segments of equal length L each. So there are two segments basically. One is this one. Another has higher area of cross section. It is like this. So this is point O. I mean as said in the question, and this is your A and this is your B. It looks like this, right? Both segments are made of same material, but cross-sectional area of segment OB is twice that of OA. So this is 2A and this is A. Done it? And both have same length. So L and L. The bar is kept on a smooth table with a joint at the origin of coordinate system attached to the table. Read it very carefully. ये जो origin है ना तुम्हारा, this is fixed to the table, not with the composite slab thing, right? So this O is basically a point on the table which is acting as the origin of coordinate system. Done it? And initially at this point O, this joint thing is kept. So यहाँ पे इसको O ना बुलाकर, क्योंकि मैंने क्वेश्चन आधा पढ़ा था इसलिए हमने इसको O बोला, लेकिन this let us call it J, joint. So initially joint is at position O, right? At point O you can say. Then the temperature of the composite bar is uniformly raised by delta theta. Now you're raising the temperature of this composite bar by delta theta, and then you're getting asked what will be the x coordinate of joint if coefficient of linear thermal expansion for the material is alpha. ठीक है. सो एक्चुअली हमें बताना ये है कि J का कोऑर्डिनेट क्या होगा जब आप इसको डेल्टा थीटा से हीट कर रहे हो. देन हाउ वी विल सॉल्व इट. सबसे पहले देखो ये जो कंपोजिट सिस्टम है वो किस पे रखा हुआ है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है. और जब आप हीट कर रहे हो ना, आप इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं दे रहे. हीट करने की वजह से इंटरनली समथिंग इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ विच आई मीन expansion thing is happening, right? So that is something internal affair, right? And that is why we can conserve position of center of mass of this composite bar, right? So if we can conserve center of mass, then I mean center of mass का जो general formula लिखते हो, suppose कर लो ये वाला x axis है. So center of mass is along the x axis. So let's say x cm क्या बोलते हैं, mass of OA. So m1 बुलाती हूँ उसको, center of mass of OA with respect to origin, that is x1 मैं बुला रही हूँ. And similarly for second portion, this one, let us call it m2 x2 divided by m1 plus m2. And I'm saying that xcm will stay constant. So अगर आप दोनों साइड फ्रैक्शनल चेंज लेते हो तो डेल्टा xcm आप क्या लिखते हो, आप लिखते हो m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 divided by m1 plus m2. Done it? And if delta xcm is 0, that is center of mass position is not changing. In that case, m1 delta x1 will be equal to minus m2 delta x2. So if center of mass of I mean हमारा सिस्टम ये पूरा है. So एक का सेंटर ऑफ मास, लेट्स से ये स्मॉलर पोर्शन का सेंटर ऑफ मास अगर इधर की तरफ शिफ्ट होता है, तो ये जो OB पोर्शन है उसका सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, सो दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस कंपोजिट सिस्टम विल स्टे फिक्स्ड. डन है. सो ऐसा कुछ होगा. अब देखो m1 और m2 को यहाँ पे हम डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो दोनों ये जो दोनों पोर्शन है दे आर मेड ऑफ सेम मटेरियल. सो दोनों का डेंसिटी सेम होगा. आई मीन मास क्या होगा, m1 आप क्या लिखोगे, m1 आप लिखोगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. सो इसका वॉल्यूम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू एल, राइट? एंड m2 को आप क्या लिखोगे, रो इंटू वॉल्यूम, दैट इज 2a इंटू एल. सो इसको अगर हम m बुलाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2m. सो यहाँ पे आप लिखोगे m डेल्टा x1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2m डेल्टा x2. डन है. सो एक राइट की तरफ शिफ्ट होगा, दूसरे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा. नेगेटिव साइन से हमें ये पता चल रहा है. और शिफ्टिंग के मैग्नीट्यूड का क्या रिलेशन है, देखो डेल्टा x1 मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू 2 मॉड ऑफ डेल्टा x2. दिस इज द रिलेशन, राइट? सो दिस इज व्हाट नाउ वी आर गोइंग टू यूज. अब देखो अभी तक तो सेंटर ऑफ मास का डिस्कशन कर रहे थे हम. नाउ हाउ वी कैन आई मीन रिलेट दिस थिंग विद द कैलकुलेशन ऑफ हाउ दिस जॉइंट विल मूव. ओके. सो जॉइंट कैसे मूव करेगा, इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको आई मीन इसको सॉल्व करते समय दिमाग में रखना है. और वो ये है, सपोज कर लो आपके पास एक रॉड है जिसका लेंथ एल नॉट है, ठीक है? और यहाँ पे ये वाला पॉइंट 1 ले लो, ये वाला पॉइंट 2 ले लो, ठीक है? नाउ यू आर हीटिंग इट विथ सर्टेन टेम्परेचर थिंग. सो लेट्स से इट्स टेम्परेचर इज गेटिंग इंक्रीज्ड बाय डेल्टा थीटा. तो क्या होगा, इट विल एक्सपैंड, राइट? सो इट विल एक्सपैंड इन दिस डायरेक्शन, इट विल एक्सपैंड इन दिस डायरेक्शन.
And let's say total expansion is delta x. If total expansion is delta x, then you will say that point 1, by symmetry we can say point 1 इस तरफ आया है delta x by 2 से, and point 2 इस तरफ आया है delta x by 2 से, such that total expansion is equal to delta x, right? डन है, ये हम कह सकते हैं डन है। उसी तरह से इफ वी हैव टू टॉक अबाउट एनी अदर पॉइंट वी कैन टेक दोस टू पॉइंट्स, एंड सपोज कर लो ये दोनों पॉइंट की बात हो रही है, तो इसका लेंथ क्या होगा? सपोज कर लो ये L1 लेंथ है, सो आई मीन देर इज if this length is L1, तो change in length आप क्या लिखोगे? L1 alpha delta theta, right? So this point will move in this direction and this point will move in this direction. Total movement is how much? L1 alpha delta theta. And I mean this point, let's say this is P, this is Q. So P will move this side by L1 alpha delta theta by 2 and this one by the same distance. So कुछ ऐसा होता है देन। चलो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। नाउ लेट अस गो विद दिस वन। सो आप एक काम करो, यहाँ पे सपोज कर लो, आई मीन दिस, इसका इनिशियल टेम्परेचर आप ले लो, कुछ भी 0 डिग्री ले लो, ठीक है? कुछ भी लोगे, आंसर के हेल्थ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सो बिकॉज नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट इनिशियल टेम्परेचर क्या है, सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस की बात हो रही है। तो इनिशियल कुछ भी ले लो, डिफरेंस हमें डेल्टा थीटा रखना है, राइट? सो टी 0 डिग्री, इनिशियली सेंटर ऑफ मास ऑफ ओए को मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रही हूँ, डन है? सो वो जॉइंट से कितने डिस्टेंस पे होगा? L/2। सिमिलरली सेंटर ऑफ मास ऑफ जेबी कितना होगा? ओ से कितने डिस्टेंस पर होगा? L/2। सो इनिशियली ये सेंटर ऑफ मास इधर है, राइट? एंड इस कंपोजिट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास आप निकालोगे तो कहीं मिलने वाला है सिर्फ दिस डायरेक्शन में, राइट? क्योंकि ओबी का मास इज ग्रेटर, राइट? सो सेंटर ऑफ मास हमें एग्जैक्टली नहीं कैलकुलेट करना, हमें बताना है कि अगर इसको हीट करोगे तो जे का शिफ्टिंग क्या होगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दैट। सो जब आपने इसको हीट किया, डन है, लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट ओबी। So this is your J, and this was the center of mass position. Initially O was here, right? And this was the center of mass position. अब जब आप हीट करोगे तो क्या होगा? सपोज करो मैं इस सेगमेंट और इस सेगमेंट की बात कर रही हूँ, दिस विल गो इन दिस डायरेक्शन एंड दिस विल गो इन दिस डायरेक्शन, ठीक है? सो हाउ मच विल बी द शिफ्टिंग? सो हाउ मच विल बी द शिफ्टिंग? ये लेंथ है L/2। सो आप बोलोगे चेंज इन लेंथ क्या होगा? L/2 अल्फा डेल्टा थीटा। दिस इज द नॉर्मल फॉर्मूला, राइट? So L/2 alpha delta theta is the shifting. Now this one will get shifted in this direction by half of this, and this one will get shifted in this direction by half of this. Let us call it delta x1, ठीक है? I mean let us call this delta x1. So delta x1 से ये इधर जा रहा है और delta x1 से ये इधर की तरफ जा रहा है, डन है? हमारे पास कुछ ऐसा है। अब आप सोचो कि इस पॉइंट का सेंटर ऑफ मास का शिफ्टिंग इन दिस डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू जॉइंट क्या है? सो जॉइंट को आप रेस्ट में इमेजिन कर लो, एंड देन विथ रिस्पेक्ट टू दैट व्हाट इज द शिफ्टिंग ऑफ दिस सेंटर ऑफ मास? तो आप बोलोगे दैट इज डेल्टा x1 माइनस ऑफ माइनस डेल्टा x1. So that is basically 2 delta x1, and that is basically how much? L/2 alpha delta theta. So shifting of this center of mass thing with respect to joint because of heating is equal to how much? L/2 alpha delta theta, ठीक है? एंड सिमिलरली आप ओबी के लिए भी चेक करोगे तो विथ रिस्पेक्ट टू जॉइंट इसके सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग सेम होगी, डन है? सो दिस इज योर डेल्टा x1, डन है? एंड इसको हमने डेल्टा x1 लिया था, सो इसको डेल्टा x1 डैश ले लो, ठीक है? सो दिस इज दिस वन। Now we have to talk about joint center of mass. I mean joint O के रिस्पेक्ट में कितना शिफ्ट हुआ है, डन है? सो एक काम करो आप यहाँ पे, सो डेल्टा x1 डैश को पहले मैं फिर से लिखती हूँ L/2 अल्फा डेल्टा थीटा। सिमिलरली डेल्टा x2 डैश, सिमिलर थिंग we will do for OB, that will be equal to how much? L/2 alpha delta theta, but this is getting shifted in this direction, this will get shifted in this direction, right? So this is in this direction, this is in this direction. Now what is this? I mean this shifting is with respect to the joint, with respect to origin. I mean यहाँ पे जो आपने रिलेशन लिखा है ना, this is with respect to origin, right? डन है? ओ के रिस्पेक्ट में हमने ये रिलेशन लिखा है क्योंकि कोई भी जिस चीज को हम ओरिजिन ले रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में वी आर मेजरिंग x1, देन वी आर सीइंग व्हाट इज द शिफ्टिंग, राइट?
So this relation is basically we have got when we are putting things with respect to the origin. डन है? So एक काम कर लो, joint के shifting आप origin के respect में कुछ भी मान लो. Suppose कर लो ये जो joint है तुम्हारा, this joint got shifted in the left direction. या right कुछ भी ले सकते हो. So left की तरह अगर मैंने लिया x, so this is shifting of x is what? This is shifting of I mean, let us write it in term of s. So this is shifting of j with respect to origin x in this direction. And what is the shifting of OA center of mass with respect to joint? That is equal to यहाँ पे हमने लिखा है L by 2 alpha delta theta. L by 2 alpha delta theta इसी direction में. So अगर एस जे ओ क्या है तुम्हारा एस जे माइनस एस ओ एंड एस ओ ए जे तुम्हारा क्या है एस ओ ए माइनस एस जे. इन दोनों को आप ऐड करोगे यू विल बी गेटिंग एस ओ ए माइनस एस ओ. दैट इज शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ओ ए विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन. दोनों को ऐड कर लो आप, सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा एक्स प्लस एल बाई टू अल्फा डेल्टा थीटा. सो दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. Okay, where x is the shifting of joint with respect to origin. Similarly आप इस पोर्शन के लिए करो. यहाँ पे क्या था तुम्हारा शिफ्टिंग ऑफ जॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ओ, तो हमने x लिया है इधर की तरफ. एंड शिफ्टिंग ऑफ ओ बी विथ रिस्पेक्ट टू जॉइंट इज हाउ मच? दैट इज योर कितना था देखो एल बाई टू अल्फा डेल्टा थीटा. राइट, एल बाई टू अल्फा डेल्टा थीटा इन विच डायरेक्शन? इन दिस डायरेक्शन. राइट, सो इफ यू विल एड इट यू विल बी गेटिंग एस ओ बी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. सो ऐड करोगे तो क्या होगा? सब्सट्रैक्ट हो जाएगा. राइट, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है. सो एल बाई टू अल्फा डेल्टा थीटा माइनस एक्स. सो बेसिकली मैंने इसको इससे माइनस किया है, सो इस डायरेक्शन में लिया है नेट. राइट, सो मैंने ये लिया कि सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ओ ए पोर्सन will shift in this direction net with respect to origin by this distance, and center of mass of OB section will move in this direction with respect to origin by this. नाउ वी कैन यूज द रिलेशन ये वाला डेल्टा एक्स वन इक्वल टू टू डेल्टा एक्स टू, क्योंकि देखो डायरेक्शन यहाँ पे ऑपोजिट ऑलरेडी टेकन है. सो सिंपली आप क्या करो मैग्नीट्यूड को आई मीन उस रिलेशन को यूज कर लो. सो दिस इज एक्स प्लस एल बाई टू अल्फा डेल्टा थीटा विल बी इक्वल टू एल बाई टू अल्फा डेल्टा थीटा माइनस एक्स इंटू टू. इसको सॉल्व कर लो. 2x दिस विल बिकम 3x एंड दिस विल बिकम एल अल्फा डेल्टा थीटा प्लस एल बाई टू अल्फा डेल्टा थीटा. ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो. 3x इज इक्वल टू हाउ मच? दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू आई मीन दिस विल बी सॉरी प्लस नहीं होगा माइनस होगा है ना, यहाँ पे ये माइनस जाएगा. सो व्हाट वी हैव टू डू, L by 2, this is L alpha delta theta minus this. Done? So what we are going to get? L by 2 alpha delta theta. Done? So this is 3x. Now what will be the value of x? This is L alpha delta theta by 6. So this is the shifting of joint. Done? मैंने इसको काफी extensively समझाया क्योंकि I just went into more detail because I feel like those who are starting with this thing, they should know every inch of this thing. डन है. सो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना है. जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तुम लोग 1.5x पे करके वीडियो को प्ले कर सकते हो. दैट विल सेव योर टाइम एंड एक्चुअली आप लोग कर भी रहे होगे ये चीज. सो दैट इज क्वाइट आई मीन good thing if you're doing, and even if you're not doing I mean it means you're learning. That's also good thing, right? So I hope it is clear, but if you have any doubt anywhere you can always let me know in the comment section. Thank you, take care of yourself, bye bye.